तो कनाडा में दो एक्चुअली मेन पार्टीज हैं. वन इज लिबरल पार्टी विच इज रूलिंग राइट नाउ एंड द अदर वन इज कंजर्वेटिव मेकिंग द primary opposition. So I am fortunate enough to have the member of parliament for the conservative party right at our home outside. The gentleman showed up in the morning and I was totally surprised. I find it really very personal, very highly impressed. First, I'll tell you the impression about the Liberal Party, and then if you want to add any changes to it, I'll have you most welcome. All right. Okay? Thank you, Mohit. First of all, Mr. Trudeau has been very good with PR when it comes to the Indian community. His trips and visits to India, his liberal policy, the name of the political party itself being liberal. So, as someone from outside of Canada, like he doing Bhangra, the Punjabi dance, and participating in community services in gurdwaras and covering almost all nations and cultures in his activities, I would call him really good PR of sorts. Okay, and I cannot be entirely blamed because ever since I started to take interest in Canadian politics, Liberal Party has been in power. I understand before it was the Conservatives. So I would like to know how it can be changed and what are the things you are working on when you campaign for your party fighting against the Liberal Party at this point in time. What we're doing is fighting for Canadians, Okay. Mohit, and you're right. Trudeau is a spectacular actor, but of course, it is all an act. He talks a great game, but to think about new immigrants to Canada trying to buy a home in Trudeau's Canada, we have this among the highest housing prices on planet Earth. But wait a sec here. Show your audience. Look around you. What we have over here. What do we have here? We have land. Yes. We have lumber. What do you build houses on? Land. Land. And what do you build them with? Lumber. We have more land and lumber than anyone in the world. Why is Yeah. our housing expensive? It should be the most affordable place on planet Earth in which to build. But because of That's it. government obstacles to getting building permits, a massive sum of land that the federal government locks down for no good purpose, and these big buildings that are empty 16 hours a day when our public servants are increasingly working from home, we're driving down the supply of housing and driving up the price. What we need to do is the opposite. We need to free up that land, remove the bureaucratic obstacles, let people quickly build new housing, and that's the Conservative plan to add 1 million new houses in Canada over the next 3 years. How much did you have to pay for it? Don't ask me, it was a nightmare. The asking price for the property was 650,000. Yes. And the day it was supposed to go on the market, by the end of the day, during the middle of the day, we got a call that you have 8 bids already. 8 bids. 8 bids. And they were like, if you want to be buying this for sure, you have to go at least 200,000 above asking. $200,000 above asking asking. price. When you come from another country and you start living here, you leave your life, your world behind. So one thing that is very dear to me is the ability to bring your parents in, because we are 2 brothers. Both of us moved here and our mother can come for so long on a super visa, but eventually we would want her to be safe here and felt someone who belongs to the country, who's able to give most of her past up as she was spent most of her life there. So a sense of belonging that comes with the practice, because right now there's a system called pool and lottery system and everything like that. So is that something that is somewhere remotely behind your Well, I certainly understand it. I mean, as we're the Conservatives believe in family. We believe in keeping families united. My wife is a refugee from Venezuela, okay. and so obviously she understands the need to be close to the family that she grew up with, and so I completely understand that desire. The lottery system is not working. It's not fair, and we need to improve it, simplify it, remove the red tape and bureaucracy, and make it possible for families to be together. Perfect. Thank you so much. And I really appreciate your time, and I hope you won't mind if after this video the Liberal MP would want, or Prospect MP, or your
I would say, competitor of sorts, Sure. would want to give his opinion as well. He may well do that. Yeah. But I'm glad to be here. Maybe he'll show up on your driveway without you even calling. Hopefully. This is the wonderful thing about Yeah. my job is I get to go out and stay in touch. We call it the House of Commons because it's the house of the common people. Because I believe that the Liberal Party has been so good with the immigration part. Now I come from India. I have a lot of fellow Indians coming in. Yeah. One of the biggest community from outside as immigrants settling into Canada and making Canada their home. Right. What are your policies around that? Because that is something that is really important and dear to me, for my people to be able to come and enjoy the same opportunities that I am having, my brother is having, my sister-in-law, all of them moved from India. Like, we have a full family here. So Yes. around that. Well, what we need in Canada is faster immigration for economic immigrants. People who come here with a skill and a job prospect should be able to get in and get their permanent residency very quickly. Exactly. But more than that, we need to speed up the recognition of foreign credentials. I was speaking to a trained doctor from Nigeria last week. She is trained in medicine. She was practicing as a doctor over there. She came here, has said she's having no problem passing any of the licensing exams. Okay. However, she can't get a residency position, so she can't actually become a doctor for many years. So we have a doctor shortage all around this neighborhood. We have someone who's fully trained, but she can't work as a doctor. The same is true for all the regulated occupations: mechanics, doctors, architects, engineers. People with skills from other places are making low wages, even with their high skills, because they're not able to get a license to practice. So what Conservatives are proposing is to speed up, work with the provinces to speed up the recognition of foreign trained professionals and tradespeople, so that they can get bigger paychecks here in Canada, contribute more to our economy. Like I said, make more, cost less, paychecks, not debt. अब जी मेरे को पहले पता होता कि एमपी आने वाला है हमारे घर पे, क्योंकि जब ये बंदा, मैं अंदर से देख रहा था, मैं कहा ये कौन है, ग्यूम बाहर निकला, ग्यूम किसी से बात कर रहा, आम सी गाड़ी, उसके अंदर अपना बंदा गाड़ी भी खुद चला रहा है, साथ में उसके एक बंदा बैठा हुआ था, ना कोई प्रोटोकॉल, ना सेफ्टी, ना कोई बॉडीगार्ड, ना लेना ना देना, कुछ नहीं, बिल्कुल अपना टी शर्ट निकर पहन के बंदा हुआ था। हमें लगा कोई बंदा आजू बाजू लोकल जो है भूले भटके गलती से आ गया, एड्रेस वगैरह कुछ पूछ रहा होगा। मैं बाहर आया, उसने मेरे को अपना पैम्फलेट पकड़ाया सीधा आगे और कहता हाय, आई एम योर लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पहले मेरे को लगा कि ये बंदा शायद जो है अभी एमपी नहीं है, ये शायद अभी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, लिबरल जो यहाँ की लीडिंग पार्टी है उनके अगेंस्ट, और वो एमपी होंगे। बट उसने मुझे बताया आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैं कहा ओ, ये तो भाई एमपी है बंदा यहाँ का। और फिर मुझे लगा, मैं एक्चुअली 3-4 बजे तक वीडियो एडिट कर रहा था, स्टाफ के इंटरव्यू ले रहा था इंडिया में, सारी वो चीज़ें चल रही थी। बट जब सो के उठा, ना मुंह धोया हुआ था कुछ, मैं बस बाहर आया और यही कपड़े मैंने पहने हुए थे हल्के फुल्के घर में, क्योंकि यही पहन के घूमता हूँ, अभी तो निकलने की तैयारी भी नहीं थी। तो वो स्कॉट बाय सरप्राइज। तो मैंने कहा भाई फिर जरा आप आ ही गए हो तो छोटी मोटी वीडियो बना लें। अब इतना भी टाइम नहीं था कि मैं माइक वगैरह लेके आता, सेटअप करता, वायरलेस वगैरह। अब ऑडियो कैसी आई है ये तो पता नहीं, बट बड़ा मज़ा आया कि भैया एमपी खुद घर आया है अपने। मगर चलो जो भी है, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। बट उन्होंने ये भी कह दिया कि आपका कोई फेडरल इशू हो, कोई वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको लोकल यहाँ पे कोई हेल्प चाहिए हो, तो हम जो है आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फेडरल लेवल पे, विच इज़ अ गुड थिंग। और अब मैं जाके ज़रा मम्मी को और भाई को बताता हूँ कि भाई आज एमपी से मिले हैं। कंजर्वेटिव 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 conservative. So most of the houses in the neighborhood, conservative, is supporting the gentleman who came to our house. I think because of his personal touch. Again, one more conservative, as you can see. भाई देखो जी, दिन जो है ना, आज घर आया हूँ तो सर में तेल चसवाने का है। सबकी मम्मी ने फर्स्ट क्लास मालिश मुलिश कर दी है। ये बाबूजी भी लगा के बैठे। आपकी मालिश होगी? आपकी किसने करी है? हाँ, क्योंकि मैं सलाह देने गया था, पीछे से जो है मम्मी की भी मालिश हुई पड़ी है। बाकी मोटी बात बताऊँ आपको? कौन पतली बता दो। चलो दोनों बताते हैं। अपने यहाँ पता कौन आया था आज घर पे?
यहाँ पे जो अपना ये एरिया है ना, इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी साहब आए थे, एमपी साहब। हैं? हाँ वो किस लिए? वोट मांगने। और गए आएंगे तो इनवाइट करने आए हैं, पार्लियामेंट सेशन में इनवाइट करने आए हैं। एमपी साहब आए थे वोट मांगने के लिए है। और मम्मी ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई बत्ती लाल बत्ती वाली गाड़ी, ना आगे 4 सिक्योरिटी पीछे 4 सिक्योरिटी, ना साथ में जो है चेले चपाटों की फौज, कोई भी नहीं। बस उनके साथ एक बंदा और था और अगला गाड़ी भी खुद चला रहे थे। मैंने तो उनका इंटरव्यू ले ही लिया, अगला मेरा इंटरव्यू भी ले गए। वो कहते भाई हमारे यहाँ पे यूट्यूबर आया हुआ है हमारे इलाके में, मैं अपने फेसबुक पेज पर डालूंगा। तो इंटरव्यू लिया, मैंने कहा देखो जी हमारे एरिया में ऐसे यूट्यूबर आए हुए हैं, ये अपना यहाँ पे हैं, इनसे इन्होंने अभी ये प्लॉट खरीदा है, तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ट्रूडो की सरकार के अंदर प्रॉपर्टी के रेट कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, मार्केट में सरकार जमीन खोल नहीं रही है और यहाँ पे जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चक्कर में पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ आके इसको रेगुलेट करेंगे अगर हमारी सरकार बन गई। मैंने उनको बोला मम्मी देखो हमारे तो हम तो सिटीजन भी नहीं है, मैं तो खैर वोट भी नहीं दे सकता है ना, तो इसीलिए, मगर मैंने कहा एज अ इमिग्रेंट मेरा मसला ये है कि मेरी मम्मी यहाँ आई हुई है, अब सुपर वीजा पे कितना ही रह लेगी यहाँ पे, है ना, तो इसलिए मम्मी का ये जो इनका लॉटरी वाला सिस्टम है उसमें अनफेयर है वो, मतलब हाँ उसमें मतलब कोई किस्मत के ऊपर है, थोड़ा एलिजिबिलिटी का सीन कम है उसके अंदर। तो हाँ, मैंने वो तो वो उन्होंने मेरे को कह के गए हैं कि हम समझते हैं कि लॉटरी वाला इतना इफेक्टिव नहीं है सिस्टम, हम जो है बेटर थोड़ा सिस्टम लाएंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि फैमिली रीयूनिफिकेशन में, वैसे तो सारे बिलीव करते हैं बट वो स्पेशली मेंशन करके गए हैं, तो मैंने आपका मुद्दा भी एमपी के आगे रख दिया है। उन्होंने कहा है कि भैया कोई भी फेडरल मैटर हो ना, वीजा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कुछ, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल माय ऑफिस फॉर एनी हेल्प, जो कि एक्चुअली यहाँ पे एमपीज वगैरह करते हैं कि भाई किसी के वीजा में कोई दिक्कत आ जाए, इमिग्रेशन में कोई आ जाए, इमरजेंसी किसी को जाना आना पड़ जाए, या जैसे फैमिली में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, किसी रिलेटिव को अर्जेंटली बुलाना है, तो एमपी लोगों के पास ऑफिस में जाके आप रिक्वेस्ट दे सकते हो, तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भेज देते हैं इमिग्रेशन अथॉरिटी को, CIC को। तो जी ये तो आपने बातचीत सुनी जो हमारे इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी, और ये घर आ गए तो बातचीत होगी, अदरवाइज़ मेरा पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल पार्टीज़ में या फिर यहाँ पे कोई ऐसा कोई ना इंटरेस्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ना ही ओपिनियन है। और अगर आप कनाडा में रहने वाले वोट के लिए एलिजिबल NRI हो, तो आप की अपनी चॉइस है कि आप जो चूज़ करें, जिसके लिए मर्जी वोट करें। और अगर बाय एनी चांस जो रूलिंग पार्टी है अभी फ़िलहाल लिबरल पार्टी, उसकी भी कोई MP हमारे घर बाय चांस आ गए, तो उनसे बात करके इंटरेस्टिंगली उनका ओपिनियन भी ले लिया जाएगा। बट वीडियो अगर ये वाली पसंद आई हो गाइस, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।